आइए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर आपस में साझा करेंगे। और नेशनल इनकम, एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, इज कैलकुलेटेड बाई हाउ मेनी मेथड्स? इट इज कैलकुलेटेड बाई 3 मेथड्स। और ये तीनों मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं? नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 वैल्यू एडेड मेथड और नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। सो लेट्स टेक द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड यहां पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी। इनकम मेथड में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कैलकुलेट करते हैं। एज यू नो, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम is equal to NDP at FC is equal to COE plus operating surplus plus mixed income of self-employed. You know what is the formula of calculating domestic factor income? This is the NDP FC is equal to, this is COE stands for compensation for employees, and this OS stands for operating surplus, and this MISC stands for mixed income of self-employed. So dear students, let's see what is actually this compensation of employee. If you look at compensation of employees is further divided into 4 more parts. It is divided in how many parts? Compensation of employee is divided into 4 more parts. The first part of this compensation of employee is wages and salaries. Wages and salaries in cash. And second number, wages and salaries in kind. एक एक चीज करके अभी हम लोग समझते हैं। और तीसरे नंबर पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। और पांचवा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट पेंशन। If you look at dear students, we have bifurcated this compensation of employee in 4 main parts. The number 1 part is wages and salaries in cash. Whatever amount an employee gets from its employer in the form of cash, that is to be known as wages and salaries in form of cash. If you look at how many factors of production are there, there are 4 factors of production. These are the land, labor, capital and entrepreneurship. In lieu of providing these factor services, a person, that is an employee, gets either in the form of wages or rent or interest or profit. So we are talking here the first one, that is the wages and salaries in cash, जो नगद में किसी एम्प्लॉई के अकाउंट में पूरे महीने हो जाने के बाद सैलरी आती है, that is actually known as wages and salaries in cash. Let's see what is the wages and salaries in kind. Dear students, you must have heard that your parents, your near and dears, those who are relatives to you, they might be getting some sorts of kind, facilities being extended by the government in the form of health facility. Sometimes it is given, if a person is holding a higher, authority, he might be given, car facility. And sometimes somebody given, free housing facilities, etc., etc. All these things, I mean here, you have to understood this wages and salaries in kind in the form of that we receive in the form of facility by the governments. It is not given in the form of cash. That is why this is known as the wages and salaries in kind. I hope you must have got this point.
But let us see what is the social security contribution by employers. Dear students, आप जब किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाते हैं, आपको कोई एम्प्लॉय करता है, तो वहां पर आप देखते हैं कि आपको अगर बीच में किसी को कुछ हो जाता है, इफ मिस हैपनिंग अकर्स, उस चीज से बचाने के लिए उस एम्प्लॉय को, जो उनका एम्प्लॉयर होता है यानी नियोक्ता, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी उनको कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए कोई इंश्योरेंस ले लेता है, उनके लिए कुछ प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे अगर मान लीजिए किसी को कुछ ना हो तो बेहतर है, अगर इस बीच किसी को कुछ हो गया तो बाद में ये फंड उसके फैमिली को दे दिया जाता है. दैट इज नोन एज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रिटायरमेंट पेंशन. यू नो, रिटायरमेंट पेंशन ये कोई ऐसा पेंशन नहीं है जैसा हम लोग ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं. यानी दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम. एक्चुअली इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम. बट दिस फैक्टर इनकम इज गिवन इन द फ्यूचर. You can say this retirement pension is a deferred payment that is given to an employee by putting his factor services during his, employmentship. So let us, dear students, try to understand the next portion of this, domestic factor income, and I hope that you might have got these 4 points and you also have been noted it down in your notebook. So let's move to the operating surplus. We are talking right now this operating surplus. Operating surplus ये क्या चीज होता है dear students? It is operating surplus is further divided into 2 main parts. Number 1 part है income from property. Income from property. और दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स है इनकम फ्रॉम एंटरप्राइजेस. इफ यू लुक एट दिस operating surplus is by and large divided into 2 main parts. You must make your mind accordingly and write down, please. This is because one of the most important topic that we are discussing under the income method. We have to understand that operating surplus is to be divided into 2 main parts. The first part is to be known as income from property and second part is to be known as income from enterprises, या कभी कभी इसको कहते हैं income from entrepreneurship. So let's, dear students, try to discuss what is these, two and how it is to be explained. If you look at income from property is further divided into 3 main parts. Number A, if you look at it is rent, or number B, it is रॉयल्टी, और सी नंबर है इंटरेस्ट. सो इफ यू लुक एट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इनकम फ्रॉम enterprises? Actually this income from enterprises is collectively known as profit. इसको collectively हम लोग क्या कहते हैं dear students? It is known as collectively, this income from enterprises is known as collectively profit. Again, this profit is subdivided into 3 main parts. So I hope you must have noted it down. So can I run it? Okay, nice. Keep on writing, and you have to understand this concept in its pitch and substance. Don't forget anything to write. So let's see, this profit is further divided into 3 main parts. The first part is known as corporate tax, and this B part is known as dividend, and C part is known as undistributed profit. Dear students, let's try to understand. As I told you that this income from enterprises and income from entrepreneurship
is also known as profit, and this profit is further divided into three main parts, that is the corporate tax, dividend, and third one is undistributed profit. Let us try to understand what is this corporate tax. Whatever a company receives in the form of profit, a part of that profit is always given to government as a tax, that is known as a corporate tax. अब जो बचा प्रॉफिट में से इस कॉर्पोरेट टैक्स को देने के बाद वो दैट एडिशन ऑफ दैट थिंग्स दैट रिमेन्ड विद द फर्म इज नोन एज अ डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. फर्दर सपोज कीजिए कि किसी फर्म में जो कोई इंटरप्राइज है उसमें एक या एक से अधिक लोग शेयर होल्डर्स हैं, तो उन शेयर होल्डर्स के बीच में उनके प्रॉफिट का एक सर्टेन शेयर इज डिवाइडेड, that is known as a dividend, and further whatever money remained with these shareholders, that is the owner of the firm, that is known as the undistributed profit. But dear students, you have to remember that this undistributed profit is also known as by two alternative names. Undistributed profit का दूसरा alternative name है, ये आप जरूर यहां पर नोट कर लें. The second alternative name is retained earning. Retained earnings. और दूसरा नाम है इसका, that is the corporate saving. आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स. ये तीसरा और ये दूसरा था, और ये यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तीन नाम हैं. चाहे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहिए, चाहे कॉर्पोरेट सेविंग कहिए, या चाहे रिटेन्ड अर्निंग कहिए, ये तीनों की तीनों चीजें एक बराबर हैं. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट अबाउट दिस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. लेट्स मूव टू द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर national income accounting. So let's move to understand the third point of this. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आपको याद कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स. यहां पर आपको देखिए कोई ओएस, और आप लोग मिस के नाम से इसको याद कर सकते हैं. दिस इज नोन एज कोई फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, and this MISC, mixed income of self-employed. So let's dear students, we have to discuss about this mixed income of self-employed. If you look at this concept, is very important concept, even it is more important than that of this compensation of employee and operating surplus, because even most of the time the mixed income of self-employed is given directly in your textbook to find out, and while you are calculating the national income you don't face any problem there to put up the value of this. But sometimes it is becomes a very huge problem there. How it becomes huge problem there? Sometimes directly MISC is not given, rather its components are given. So we have to understand what does this MISC refer to. Actually mixed income of self-employed का concept national income accounting में ये हमारे देश का एक innovative idea है, because of blessings in disguise. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ most of the sectors are under unorganized sector. Government is having its control over them, so it becomes difficult to calculate the income, rent, royalty, interest, profit, etc. of small businesses that are being run in every corner of our country. Suppose if you look at, there are so many चाय की दुकान है, कहीं पान की दुकानें हैं, कहीं पर कॉबलर्स हैं, कहीं पर वेजिटेबल वेंडर्स हैं, कहीं छोटी छोटी ये चीजें जो हैं, जो लोग अपना छोटा छोटा जीविकोपार्जन चलाते हैं, इनके आय के जो स्रोत हैं उसका पूरा सिस्टम गवर्नमेंट के पास नहीं है. सो जो लोग ईमानदार हैं वो तो गवर्नमेंट को अपना इनकम शो करते हैं, बट दोज हु आर नॉट सो ऑनेस्ट
as we are expecting. So they do not, open their card. That is why they are, and their income is not come under, the whole spectrum of the national income accounting. So what government does for that? Government speculates and infer, and accordingly it keeps a lump sum amount under the head of mixed income of self-employed. So if you look at what is the mixed income of self-employed, mixed income of self-employed compensation of employee भी है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी है. इट मीन्स मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई व्यक्ति छोटा मोटा नौकरी करने वाला भी होगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाला भी होगा, और कोई छोटा मोटा 2-4 लोगों के को लगा करके एक छोटा अपना इंटरप्राइज भी शुरू करने वाला होगा. तो इस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस दोनों एडेड होते हैं. So dear students, I hope you must have got this point. Let us see कि how do we proceed to calculate the national income. What we understood and what we learned here, we learned only to calculate the domestic factor income. And domestic factor income यानी जिसे हम domestic income कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Domestic factor income को हम लोग बोलते हैं NDP at FC, फैक्टर कास्ट पर. इसे आपको याद रखना है. और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं दोस्तों? नेशनल इनकम इन दैट फॉर्म इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट. क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट. नाउ लेट अस टू बैलेंस दिस. In order to get this national income यानी NNP at FC is equal to NDP at FC. अब यहां पर आपको एक एक करके बैलेंस करना है बच्चों. If you look at this N is equal to N, so there is no problem, there is no balancing situation. But here it is a national, and here what it is? It is domestic. And we have to calculate this national, and we are having this domestic. So what do we do here to come out at national concept? National and domestic का डिफरेंस क्या होता है? NFIA. So यहां पर हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे. यानी अब आप देखिए N फॉर क्या हो गया? यहां पर आप देख लीजिए नेशनल इज इक्वल टू D प्लस NFIA. If you remember your formula, you get it, and accordingly we have set there in this formula, and further this FC is equal to FC. So this formula is balanced now, and now we have become to calculate the national income through this income method. I hope आप सभी लोगों को ये जरूर अच्छा लगा होगा, और आप लोग आगे भी मेहनत करेंगे. Tomorrow we will come with a new topic and new things of the economics. Thank you very much for being with me.